इससे रुक जाएगी। नहीं लिखना होगा ना, तो थोड़ा नजर आ जाएगा। ये इसकी बोल हमने लिखा आया था रिकॉर्डिंग शो हो रही है, वो लिखो कर दो। Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Sarwar Aziz, your chemistry teacher. Now we are moving towards PMC syllabus, chapter number 4, liquids. First one is we have to discuss the properties of liquid according to Dipole. तो हमने liquid की properties discuss करनी है. Then intermolecular forces, ये भी हमारे सिम बोर्ड में नहीं है. 5 types of intermolecular forces that need to be discussed in this particular liquid portion. क्योंकि हमने यहाँ पर वो तमाम टॉपिक डिस्कस करने हैं जो हमारे सिम बोर्ड में मौजूद नहीं है. थर्ड वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग की चर्चा में बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. देन वेपर प्रेशर, इट्स आल्सो प्रेजेंट इन सिंथेटिक बुक. बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, इट्स आल्सो प्रेजेंट इन सिंथेटिक. Now moving towards in learning objective, we need to discuss the simple properties of liquids like diffusion, compression, expansion, motion of molecules, spaces between them, and intermolecular forces, kinetic energy based on kinetic molecular theory. So all these topics need to be discussed which are not present in SIM board. हमारे SIM board में सिर्फ diffusion है, compression है, and expansion and contraction. बाकी ये सब चीजें मौजूद नहीं है. उसके बाद discuss या explain the physical properties of liquids such as evaporation, vapor pressure, boiling point. ये सब मौजूद है SIM board में. Describe the hydrogen bonding in water, ammonia, and HF. All present regarding hydrogen bonding topic. Remember, hydrogen water can form 2 hydrogen bond, ammonia and HF can form 1 hydrogen. And finally, anomalous behavior of water when its density shows maximum at 4 degrees centigrade, and maximum density at 4 degrees centigrade is 1 gram per centimeter. While at 0 degrees centigrade it is 0 gram per centimeter. 0 degrees centigrade per its density is 0.98 gram per cm3, while at 4 degrees centigrade its density is 1 gram per centimeter. So we need to discuss these topics. So firstly, we are going to start properties of liquid, then intermolecular forces, and then simple properties of liquids. These 3 topics need to be discussed. So first, we are going to explain the properties of liquids. It's chapter 4. The name of this liquids. First one, in liquid, you are aware that molecules are close to each other. Secondly, they have weak intermolecular attraction as compared to solids. Third one, have
moderate kinetic energy. Molecules have moderate kinetic energy. Definitely would be greater than solid state, but less than gaseous state. Molecules slip over each other as they have a little bit intermolecular spaces. Hence, molecules slip over each other. Hence, no fixed shape, but fixed volume. Volume की वजह some sort of attraction. They do have a bit better attraction. That's why they have a fixed volume. Since they have a moderate kinetic energy, that's why they don't have a fixed shape. Next one is volume is fixed. They have fixed volume. Molecules of liquid undertake restricted translational rotational and vibrational motion. इनमें ये तीनों मोशन होती हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन गैसेस में बहुत फास्ट होती है ये सारी मोशन. डिफ्यूजन ऑब्वियस बात है, लेस देन गैसेस. Here, Joule-Thomson effect absent. Specifically, Joule-Thomson effect specifically for gases. Here, diffusion is also absent. And what is diffusion? The escape of particles through tiny holes is diffusion. So, diffusion is also absent. Effective collision is obvious present. And examples of water, alcohol, and oil, etc. These are a few properties of liquid as per Federal. Close to each other, weak attraction, moderate kinetic energy, slip over each other, has no fixed shape, fixed volume. Molecule do have a restricted translational, rotational, and vibrational motion. Diffusion less than gases. Joule-Thomson effect absent. Diffusion is absent, but they have effective collision. And the examples are water, alcohol, and oil. These are a few properties of liquid. Now we are moving towards the next topic, that is intermolecular forces. Now we are moving towards the intermolecular forces. So remember, intermolecular forces are of 5 types. That includes number 1, that is dipole forces. Number 2, dipole forces. Number 3,
Dipole-induced dipole forces. Number 4, which is London dispersion forces. And the number 5, fifth one is hydrogen bond. All these topics are not present in same textbook. So we need to discuss one by one. First one, we are going to discuss a dipole force. So number 1 is dipole forces. बेसिकली ये डाइपोल फोर्सेस होती हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है. मींस एलिमेंट्स आर नॉट बीइंग हाइलाइटेड, तो लिहाजा हम कह सकते हैं द अट्रैक्टिव फोर्सेस these are the attractive forces between positive end of one molecule with the negative end of other molecule. एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड is called dipole forces. यानी dipole forces में एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को जो अट्रैक्ट करता है वो कहलाता है dipole फोर्सेस. इट मींस हम कह सकते हैं कि dipole इंटरेक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. तो हम इसको ये कह सकते हैं कि दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. और हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किसके दरमियान है? बिटवीन परमानेंट डाइपोल्स इन मॉलिक्यूल. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल इन मॉलिक्यूल्स. अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी तरह से क्लोरोफॉर्म, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं ये सब के सब इसमें शामिल हो सकते हैं. अब जितनी ज्यादा ये डाइपोल फोर्सेस होंगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, तो जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हैं, अब मिसाल के तौर पर अगर ये ग्रेटर है तो यकीनी तौर पर मेल्टिंग पॉइंट ये भी ग्रेटर हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट ये भी ग्रेटर हो सकता है, और उसके अलावा हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया ये भी ग्रेटर हो सकता है, सब्लिमेशन ये भी हो सकता है. तो ड्यू टू if the dipole forces are greater, then their greater would be the value of melting point, then the boiling point, vaporization and sublimation. अच्छा, बॉन्ड एनर्जी याद रखिएगा डाइपोल फोर्सेस की होती है that is 3 to 4 kilojoules per mole. So that can be asked. So bond energy of dipole forces are 3 to 4 kilojoules per mole.
अब यहाँ पे ये बात रहता है कि अगर के डायपोल डायपोल फोर्सेस डेफिनेटली अगर इन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल में होगी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहेंगे between permanent dipole in molecules, and there could be examples that HCl or chloroform. If the molecules having stronger dipole dipole forces, then their thermodynamic property will also be stronger or greater. Second is ion dipole forces. अब ये बेसिकली क्या होती है? These are an attractive force which are that result from electrostatic attraction. Again, यहाँ electrostatic का word आ गया, means positive or negative attraction between an ion and a neutral molecule. एक आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के दरमियान, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसा हो, that has a dipole, और जिसमें दो पोल्स मौजूद, और ये कॉमनली कहाँ होता है? मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सॉल्यूशंस, और ज्यादातर ये किसमें होता है? सॉल्यूशंस में होता है. दैट इज पॉजिटिव आयन attracts the partial negative end of neutral polar molecules. तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा होगा कि पॉजिटिव आयन बेसिकली अट्रैक्ट हो रहा है एक पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल्स. तो इट कुड बी अ सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन में भी क्या होता है? Na पॉजिटिव, इस पर क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इस तरह से सम सॉर्ट ऑफ ये हाइड्रेशन ही की तरह का होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी आयंस के गिर्द जो है वो सराउंड करता है. सो रिमेंबर, आयन डायपोल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस जब किसी भी आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के दरमियान. तो लिहाजा इसमें जिस चीज पर ये डिपेंड करता है आयन डायपोल फोर्सेस, वो चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन भी होता है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. इन तीन फैक्टर्स पे आयन डायपोल फोर्सेस जो है वो डिपेंड करता है. और आयन डायपोल फोर्सेस जो है ये जस्ट लाइक, सिंपल रिमेंबर, इट्स जस्ट लाइक हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन मींस the process in which water molecules surround and interact with solute ions or molecules. The third type is dipole-induced dipole forces. Actually, these are the weak attraction that result when a polar molecule like HCl induces a dipole in an atom. एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोल जनरेट करता है एटम में, और इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कैसे करेगा डायपोल? बाय डिस्टर्बिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ नॉन पोलर स्पीशीज. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली पोल इंड्यूस हो जाते हैं. सो डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, पोलर मॉलिक्यूल्स किसी न्यूट्रल एटम के पास जाएगा और उसमें पोल्स इंड्यूस करने की कोशिश करेगा, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी उनके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करके डायपोल इंड्यूस करेगा. सो दीज आर डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस.
which are weak attractive forces. So remember, polar molecule induces a dipole in an atom, or in a non-polar molecule also induce dipole by disturbing arrangement of electrons in a non-polar species. So these are the induced dipole forces. The fourth one is London dispersion forces. These are the force of attraction between non-polar molecules which becomes polar for an instant are called London dispersion forces. अब इसमें होता ही है कि अगर हम फर्ज करें दो नियॉन के एटम एक दूसरे के करीब आ ये नियॉन के इलेक्ट्रॉन है 10 अब जब ये एक दूसरे के करीब आ गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब चार्जेस डेवलप होंगे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हियर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिपल्जन होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो उसकी कॉज क्या हुई बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन वेरी अब ये बेसिकली फटाफट पोल जनरेट हो गए तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल और जब इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज हो अब आप देखें प्रॉपरली फ्रॉम नियॉन ये प्रोटॉन है ये दूसरा नियॉन है अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव शेल्टर मिल गया इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव नेगेटिव दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि द मोमेंटरी attractive forces created between instantaneous dipole and induced dipole. So momentary force of attraction created between instantaneous dipole and induced dipole are called London or dispersion forces. These were seen in noble gases which occur as you can see that substances like hydrogen, helium, neon, argon, fluorine, methane, etc. All these are non-polar in nature. And these were first seen in noble gases. So you can say that the force of attraction between instantaneous dipole and an induced dipole are also known as dispersion forces or London dispersion forces. Because Fritz London was the first scientist who first identified. And the major factors on which London dispersion forces depends, that is atomic or molecular size, the polarizability of atoms and number of atoms in a molecule. और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 1 से 10 किलो जूल्स पर मोल. These are the bond energies of London or dispersion forces. The last intermolecular forces are hydrogen bonds. So the bond energy which are mentioned in Punjab board, the ion dipole forces, remember their bond energy is 10 to 40 kilojoules per mole. Dipole forces which are 3 to 4 kilojoules per mole. London dispersion forces bond energies are 1 to 10 kilojoules per mole. The last one is hydrogen bond. Hydrogen bonding is the fifth
intermolecular forces. These are the 5th intermolecular forces. अब इसमें हम ये क्या कहेंगे? These are the attractive forces between positive hydrogen atom of one molecule with the, हम यूं कह सकते हैं, with the highly electronegative atom of other molecule. अब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है? नाइट्रोजन ऑफ 5 है, ऑक्सीजन ऑफ 6 है एंड फ्लोरीन ऑफ 7 is called हाइड्रोजन बॉन्ड. और इसके अलावा इसको और क्या कह सकते हैं? और प्रोटॉनिक ब्रिज. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 20 से 40 किलो जूल्स पर मोल. It is the bond energy which exists in hydrogen bonding. And you are aware that due to the presence of hydrogen bonding, the melting point, the boiling point, the solubility, the stability of molecule definitely increases only due to hydrogen bonding. So these are the 5 intermolecular attractive forces which are present between molecules. And these are the intermolecular forces. And the intermolecular forces means the forces between molecules. And remember, all these intermolecular forces which are being discussed over here, these are secondary bond. Some other intermolecular forces are also present, which are known as intramolecular forces. And intramolecular forces, the forces between atoms of a molecules, are called intramolecular forces, which are primary bond. Their examples could be ionic bond, covalent bond, or coordinate covalent. जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इन लिक्विड टेक प्लेस. लिक्विड में डिफ्यूजन ऑब्वियस बात है होता है. क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एंड ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. बट restricted movement of molecules reduces rate of diffusion. अब इनमें जो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशन होती हैं, ये क्योंकि कम होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा क्लोज होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन एज कंपेयर टू गैसेस क्या होता है? कम होता है. नंबर सेकंड इज compression, that is effect of pressure. Liquid cannot be compressed significantly. Remember, liquid cannot
be compressed significantly upon increase in pressure, because molecules are very close to each other already in close contact with each other. तो लिहाजा सिग्निफिकेंट इनमें कंप्रेशन नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर था, अगर मैं 2 एटमॉस्फेयर कर दूं तो ये रिड्यूस करेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.0045%। लिहाजा कंप्रेशन बहुत नॉमिनल होता है लिक्विड। Third one is expansion, that is effect of temperature. You all are aware that liquids expand on heating. Obvious, liquid expand on heating. अब heat करने पर expand क्यों हुई? Because intermolecular forces decreases. सबसे पहले intermolecular forces decrease हो। अब जब intermolecular forces decrease हो गया तो effective collision बढ़ जाएगा, causing increase in effective collision. अब क्या क्या काम हुआ? जब हमने लिक्विड को हीट किया तो वो एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंड करने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कम हो गई, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। और इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज तो सबसे पहले क्या होगा? इंक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, डिक्रीज इफेक्टिव कोलिजंस, डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी। दैट डेफिनेटली जब कोलिजन कम हो गया और अट्रैक्शन बढ़ गई तो डेफिनेटली इट कॉजिंग अ कॉन्ट्रैक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड की तरफ जाएगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। Fourth property is motion of molecule. Liquid molecule definitely move with lesser speed. Move with lesser speed. अब lesser speed से क्यों है? Because due to large force of attraction among them. उनमें कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। तो लिहाजा मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी? डेफिनेटली स्लो होगी। और ऑब्वियस बात है इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन इन जनरल लिक्विड मूव विद लेसर स्पीड ड्यू टू large force of attraction between them, that causing lesser in kinetic energy. Fifth one is spaces. Space among molecules. Now we talk about the space among molecules. As you are aware that molecules are close together
एक दूसरे के मॉलिक्यूल बहुत करीब होते हैं, very little spaces between them. अब जब इनमें स्पेसेस बहुत कम है तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जब स्पेसेस कम है तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, मॉडरेट। So as far as spaces are concerned, that molecules are close together, having little spaces between them, so their kinetic energy would be moderate. The sixth one is intermolecular forces. If we talk about the intermolecular forces, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट क्योंकि ये स्टेट सॉलिड और गैस के दरमियान में होती है, सॉलिड के मुकाबले में कम होती है, मगर लिक्विड गैस के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑब्वियस बात ज्यादा होती है। और यकीनी तौर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली डिपेंडेंसी होती है फिर किस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर सब चीजें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Last forces of attractions are that is kinetic energy. The properties of liquid में जो 7th property है, it is kinetic energy. अब हमें पता है कि molecules of liquid due to strong intermolecular forces have minimum movement क्योंकि मॉलिक्यूल फ्लो में तो मूवमेंट बहुत कम है, मिनिमम कोलिजन, जगह ही नहीं है इनके पास टकराने के लिए, तो कोलिजन भी क्या होगा, इनमें मिनिमम होगा। अगर मैं वाटर की एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, as the molecules of water are close to each other and have strong force of attraction due to hydrogen bond, so they have low kinetic energy. So means that is having low kinetic energy. So that's all about the intermolecular forces. Some properties of liquids we discussed, that is diffusion, compression, that is effect of pressure, expansion, effect of temperature, motion of molecules, spaces among them, intermolecular forces, and kinetic energy based on kinetic molecular theory.